I'm crossing over to News18 Sachin, who is joining us live from Manali. Sachin, आप मौसम और तापमान के बारे में और बता सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू मनाली के मौसम की, तो यहाँ पर जो इसमें लगातार जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ अभी के तापमान की, अगर मैं बात करूँ मनाली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो -5 डिग्री के करीब जो है मनाली का तापमान यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालाँकि जिस तरह लंबे अरसे से यहाँ पर जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते 2 दिन पहले जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो है एक-एक घाटी में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में शुष्क ठंड इसमें काफ़ी ज़्यादा, और इससे ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों सहित जो अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालाँकि इस बार जो है जिस तरह से जो एक उम्मीद होती थी बर्फबारी की, वो यहाँ पर नहीं होने के कारण भी इस बार जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द घाटी में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, तो उससे कहीं न कहीं और ज़्यादा ठंड यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की जो जिला लाहौल स्पीति है, जिसे जो है कोल्ड रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर भी जो है तापमान जो है -15 डिग्री के करीब जो है वहाँ पर जो पहुँच चुका, और इसके साथ ही जो बहने वाले नदी नाले और झरने हैं वो भी वहाँ पर जो है जमने आरंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ जिस तरह जो ये मौसम लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें आ रही है, क्योंकि शुष्क ठंड के चलते जो लोग यहाँ पर जो है सर्दी जुकाम की जो काफी शिकायतें आ रही है, और जो खासकर यहाँ के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीजों की जो काफी ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जिस तरह जो है न्यू ईयर भी है, और ऐसे में न्यू ईयर को लेकर जो काफी सारे पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो घाटी में बर्फबारी हो। लेकिन जिस तरह मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें भी कुछ निराशा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, वो जो है इस ठंड के कारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे जो है जिसे हिमाचल जो फलों के लिए भी जाना जाता है, खासकर सेब के लिए, तो उस सेब की फसल पर भी जो है इसका यहाँ पर जो असर साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बर्फ ना होने के कारण जो है चीलिंग आवर जो होते हैं सेब के लिए, वो जो यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यदि इस बार जो है बर्फबारी यदि कम मात्रा में होती, तो इसका सीधा असर जो आगे आने वाले गर्मियों के दिनों में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कम बर्फबारी जो है पहाड़ों पर होगी, उससे जो है पानी का संकट भी यहाँ पर जो है खड़ा हो सकता है। ऐसे में सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बर्फबारी हो, और उसके जो है यहाँ के जो यहाँ की जो टूरिज्म है, उसके साथ जो यहाँ की फसलें हैं, उसे उसका जो फायदा। Good evening, hello and welcome. You're watching CNN News 18. This is Nation at 5 with me, Poonam Burde. Let's get you started with what's happening in Gujarat, where the Prime Minister is currently. He's in Ahmedabad. He's visiting his ailing mother, Hiraba, who was hospitalized this morning. The hospital has released a medical health bulletin going on to say that her condition is stable. We're given to understand that Prime Minister Modi is likely to stay in Ahmedabad today. And across political party lines, politicians have been taking to Twitter, to social media, to let the Prime Minister know that they stand with him in this tough time and hoping for his mother's quick recovery. Congress President Mallikarjun Kharge and leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi as well took to Twitter and expressed their support. Politicians from other political parties as well taking to Twitter, standing with the Prime Minister. Mayur, my colleague, now joins us for more on this. He's on ground there in Ahmedabad. मयूर, क्या खबर आ रही है? क्या प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में ही रुकेंगे या उनका दिल्ली रवाना होना कुछ ही देर में पॉसिबल है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी UN मेहता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल उनके साथ है। साथ ही अब जो अस्पताल के डीन है उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात है वो की। उन्होंने माताजी की जो तबीयत है उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया, और उसके बाद माताजी को मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं। अभी जिस तरह से खबर मिल रही है उस मुताबिक प्रधानमंत्री अभी भी 2-3 घंटे अहमदाबाद रुकेंगे, ऐसे जो मैसेज है वो मिल रहे हैं। अभी जो कंडीशन है हीराबा की वो स्टेबल है। बाकायदा जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा हेल्थ बुलेटिन में भी उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इस तरह का जो हेल्थ बुलेटिन है वो दिखाया गया है। और साथ ही अभी जो है प्रधानमंत्री हीराबा से मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कब तक रुकते हैं। अगर गुजरात सरकार की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। होम मिनिस्टर जो है वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और अभी पूरा जो गुजरात गवर्नमेंट का
तंत्र है वो भी हॉस्पिटल पे ही है, प्रधानमंत्री अभी है। और अभी जिस तरह की खबर मिल रही 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में ही रुकेंगे, इस तरह की खबर अभी अंदर से मिल रही है। जी, हाल फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री अभी अस्पताल में ही रहेंगे। मयूर, जैसे आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री गुजरात के भी वही हैं, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या उनके अन्य जो भाई बहन हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो भी आ सकते हैं हॉस्पिटल या वो ऑलरेडी वही हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ माता हिराबा जो है वो रहते हैं। तो पंकज मोदी ही उन्हें अस्पताल सुबह ले गए थे, तब डॉक्टरों ने उनकी जो जांच है वो की थी। सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही थी, सीटी स्कैन उनका करवाया गया था और उसके बाद जो है उनको एडमिट किया गया था। धीरे धीरे सब भाई, प्रधानमंत्री के जो बड़े भाई सोम भाई है वो भी पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल, और दूसरे जो प्रहलाद भाई है वो भी अस्पताल पहुंचेंगे। यानी धीरे धीरे पूरा परिवार है वो भी अस्पताल पहुंचने वाला है। छोटे भाई पंकज मोदी और बड़े भाई सोम भाई मोदी वो दोनों अभी अस्पताल में ही है। और अब देखना ये होगा कि अब अस्पताल से किस तरह का हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जाता है, और अभी किस तरह की जो कंडीशन है वो है। अभी अब जिस तरह से दूसरा बुलेटिन निकाला था तो उसमें स्टेबल बताया जा रहा था। तो अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कितनी देर तक रुकते हैं और उनके परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं वो भी आ रहे हैं। 2 भाई उनके हैं, एक बड़े भाई और छोटे भाई, वो अभी अस्पताल में ही है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। जनक दवे also joins us from outside the UN Mehta Hospital where the Prime Minister's mother is currently hospitalized. जनक, प्रधानमंत्री अभी वही हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं, क्या और बीजेपी के नेता, क्या और मंत्री भी आना उनका अपेक्षित है? देखिए, फिलहाल भूपेंद्र पटेल तो निकल चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी भी वहाँ पर चौथे मंजिले पर, जो मैंने बताया उस मुताबिक वहाँ पर अभी भी हैं और वहाँ पर हिराबा का इलाज चल रहा है। ये जो तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको, यूएन मेहता अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं ये, और जो क्या बैरिकेड है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। उनका जो कॉन्वॉय है वो भी अभी पूरी तरीके से दिख रहा है। हो सकता है कि यहीं से पीएम मोदी आज शाम को ही दिल्ली के लिए जा भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं, दोनों। चूँकि अभी तक मेडिकल बुलेटिन इसका आया नहीं, चूँकि जो यहाँ पर जो आर.के. पटेल हैं, यूएन मेहता के जो डीन, उनकी निगरानी में पूरा इलाज चल रहा है और उनसे वो पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और उनको जो कि चीफ विश्व रूम में रखा गया है, वहाँ पर पीएम मोदी हैं और आर.के. पटेल उनको पूरी मेडिकल की जो हिस्ट्री है वो देते हुए सारी चीज़ों का ब्यौरा भी दे रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल प्रोटोकॉल्स रहे हैं और सुबह से उनका इलाज किस तरीके, जब सुबह उनको लाया गया सांस लेने में दिक्कत थी, उसके बाद की किस तरीके की स्थिति रही। और जिस तरीके से मयूर ने बताया, पंकज मोदी उनको लेकर आए थे, जिनके साथ वो रहती हैं, और सुबह ही पीएम को इस बारे में अवगत भी कराया गया था और पीएम लगातार अपडेट लेते रहे थे। और उसके बाद 1:30 बजे ये तय हुआ कि पीएम भी यहाँ पर उनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आएंगे। और उसी समय पर एक मेडिकल बुलेटिन भी आया है, उसमें लिखा गया है कि फिलहाल उनका जो हालत है वो स्थिर है और स्टेबल बनी हुई है। और अभी उम्मीद की जा सकती है कि पीएम जब यहाँ से निकले उस समय एक और मेडिकल बुलेटिन, क्योंकि अमूमन 5 से 6 घंटे के बीच में एक नया मेडिकल बुलेटिन आता है, तो किस तरीके की स्थिति है वो पता चलेगी। जहाँ तक लोगों का बात है, आपने जो सवाल पूछा वीवीआईपी का, तो यहाँ पर अभी भी जो सांसद परिमल नाथवानी है वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर है, चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। सारे अहमदाबाद के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं, चाहे आप गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर कह लीजिए, अहमदाबाद वेजलपुर से अमित ठाकर कह लीजिए, एलिस ब्रिज से यहाँ अमित शाह कह लीजिए, ये तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी फ़िलहाल जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो लगातार अभी चल रहा है और पीएम अभी ऊपर है। और उसके बाद जब हो सकता है थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर नीचे आए, उसके बाद आधिकारिक तौर पर अस्पताल की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में निकल सकते हैं, रवाना हो सकते हैं वहां से, तभी शायद एक और मेडिकल हेल्थ बुलेटिन रिलीज हो हॉस्पिटल से। और कुछ ही दिनों पहले जनक, प्रधानमंत्री अपनी मां से मिले थे जिस दिन दूसरा पड़ाव था चुनाव का, जिस दिन हीराबा और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट कास्ट किया था। इसी महीने की बात है वो, कुछ दिन पहले की।
बिल्कुल उस समय भी जब जब पीएम मोदी को मौका मिलता है वो ज़रूर हिराबा को मिलने जाते हैं, और वो तस्वीरें भी, हर तस्वीरें वो आपको याद होगी कि जब भी वो वहाँ पर जाते हैं तो बिना प्रोटोकॉल के, यहाँ पे कुछ एक मूवमेंट हो रही है इसके चलते हमें थोड़ा हटना होगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आपको कि जो बिना प्रोटोकॉल के वो वहाँ पर अपनी माँ को मिलने जाते हैं, सिक्योरिटी में महज 1 या 2 कार होती हैं वो, और वहाँ पर जाते हैं मिलते, और जितना समय बिता सके क्वालिटी टाइम जो कहें वो बिताना चाहते हैं और वो बिताते आए। साथ में हो सकता है तो या डिनर भी उनके साथ लेते हैं। वो तस्वीरें भी हमने इससे पहले लिखी कि चाहे खिचड़ी हो और भाकरी और सब्जी हो, वो भी एक जो गुजराती खाना होता है वो उनके साथ लेते रहे। उससे पहले 18 जून को जब 100 साल हिराबा के पूरे हुए, शताब्दी वर्ष के तौर पर पीएम का वो आर्टिकल भी आपको याद होगा जिसमें उन सारी बातों का उन्होंने ब्यौरा किया था कि किस तरीके की उनकी स्ट्रगल वाली पूरी ज़िंदगी रही, उनकी माँ की ज़िंदगी रही। तो 18 जून को ही उन्होंने 100 साल पूरे किए हुए हैं। तो वो बात भी उसी समय 6 महीने पहले उनसे मिलना हुआ था, और उसके बाद अब जब चुनाव थे सेकंड फेज़ के, उस समय पर 5 दिसंबर को उनसे मुलाकात हुई थी। तो जितनी कोशिश हो सकती है जब भी पीएम यहाँ पर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि माँ के साथ, उनकी माँ के साथ वो समय बिताए, और अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी वो थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं और हिराबा के साथ समय बिताते हैं, चाहे थोड़ा ही समय हो, लेकिन वो जाते ज़रूर हैं। वो उससे पहले भी आपने देखा है कि हिराबा को एक बार 7 LKM यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, वहाँ पर भी वो ले गए थे, और वो तस्वीरें भी उस समय आपको याद होगी कि उन्होंने वो तस्वीरें भी साझा की थी पीएम ने, कि किस तरीके से पीएम वहाँ पर गए और पीएम के साथ उन्होंने समय बिताया था। तो आज भी पीएम वो हर माँ का बेटा होता है जो हर माँ का ख्याल रखता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से जब माँ की तबीयत नासाज लगी तो पीएम खुद यहाँ पर आए, और अभी उनकी जो पूरी जानकारी है उनकी हेल्थ बुलेटिन की, वो अभी जो आर के पटेल है डीन उनसे ले जा रही है। जी बिल्कुल जनक, for the moment thank you so much for getting us the latest. The Prime Minister is still there checking up on his mother who's admitted in the Ahmedabad hospital. Before now, we're shifting focus to what's happening in our neighborhood, specifically our neighbor China. China is on the verge of a complete collapse, many would say, especially as far as the Covid-19 crisis is concerned. There have been media reports across the last few weeks of over 5,000 deaths being recorded on an everyday basis. Morgues and hospitals are overburdened. Videos that are surfacing every single day show the crumbling state of medical infrastructure in the country. And due to this dire situation, there's a limited supply of medication and a steep rise in the prices. That is now forcing Chinese nationals to turn to the black market for Indian drugs, with appeals being made on social media platforms as well. Topics like anti-COVID generic drugs have been trending on social media in China, with users exchanging messages on how to get a hold of these medicines, many of which are being sold on the dark web, are being sold illegally in the country. And yet, China officially denies any such resurgence of the pandemic. They, in fact, are lifting their curbs, going on to put on a picture of how everything seems to be all right, but it's quite the contrary. We are seeing that there is in fact a black market which is going on where Indian generic medicines are being sold illegally. How do you see all this as an expert? So it is very important, for China to understand what all are their drug requirements from the systems perspective, and they should, kind of work on with which drugs they are, approving as per the guidelines. The guidelines are quite standard. So if the drugs are there from India and they are being sold in black market, yes, it is not correct. It is illegal. Number two is that even Indian government can take an action with regard to that. And it is something like we have Act for Narcotics also. So it has to be looked at in that perspective. And even our own people have got to be warned with regard to this part that, we should not be selling these drugs illegally. But then, if China is in need of drugs, basically, you see, it is one world, one health. So we have to help them out with the official memorandum of understanding. Abhishek, my colleague, now joins us more on this. Abhishek, we've seen over the last few days the kind of videos that have been surfacing where bodies are being piled up. The health infrastructure clearly is taking a toll there, even though China, on the face of it, seems to say all is well. So it looks like limited supply and steep price of the approved drugs in China. That is, two approved that Chinese government has approved for COVID treatment has given rise to this black marketing. That is bringing drugs from Indian markets and selling them in dark web or some through black market, because the Indian generic version of the two antiviral drug that Chinese government has approved
comes at almost like 70 to 80% cheaper than what is officially being available there. However, selling Indian generic drug in black market is very punishable offense, but still, since the demand is very high and availability is very low, people are opting and going for these resources to have as much of medicine, because we have seen kind of situation that is in China. Hospitals are full, patients are not getting adequate medical facility because of the overwhelming number of patients into the hospitals. ICUs are full. So people are trying to take care of themselves, having medicine at home only. And in this scenario, Indian generic medicine, which is coming at a very cheaper price and is also being made available in black market, is coming very handy for people in China to deal with this current crisis that is going on. Right, Abhishek, thank you so much for getting us the latest on that. China seems to be imploding as far as the COVID-19 crisis is concerned. The latest crisis that it seems to be facing is that there aren't enough drugs, or what is available is very expensive, and which is why the black market there seems to be booming. And India is now seeming to come to the rescue of the Chinese nationals, because it's Indian drugs that are turning out to be the saviors for all of these Chinese nationals that are reeling under this COVID crisis. Dr. Rajiv Dasgupta, chairperson of the Center for Social Medicine and Community Health of JNU and a member of the National COVID Task Force here in India, joins us on this broadcast. So thank you so much for speaking with us. As far as China's condition at the moment is concerned, there's not one variant, there are multiple variants is what many are also saying, which is why we're seeing a resurgence in the cases there. There's also the thing about vaccines and how two of their vaccines are far less effective than the kind of vaccines that we have administered here in India, which is perhaps why we're seeing not only the kind of resurgence, but the desperation in the people there to lay their hands on any sort of generic drugs that they can manage to get. Yes, thank you. The situation in China, as it seems from a plethora of media reports, from all international channels, is that not just the surge, but the fact that the preparedness seems to be wanting, and that basic drugs are in shortage or being rationed. And what you just reported is really an outcome or a marker of that. As far as vaccines go, yes, the Chinese vaccines that were indigenously developed in that country were inducted into the program quite early, most likely based on the initial variants that caused the first set of cases in China. And add to that the zero COVID policy that China very rigidly implemented actually meant that the population there was not exposed to the virus or the various strains as they evolved, which is what we have experienced in India, plus of course a very robust vaccination program. Absolutely. As far as this illegal black market of drugs is concerned, Dr. Rajiv Dasgupta, we know that it's available on the dark web. It's not just as far as COVID-19 drugs or China is concerned. This is a pattern that we've seen across the world as well. As far as Indian drugs in the black market in China is concerned, now India has always maintained that whenever any country, including China, wants our help, we're ready to do so. But China has never officially asked us for it. So as far as the illegality of this whole matter goes, China, of course, perhaps will be taking punitive action because, like I said, it's illegal there. But can India be doing something about it? Yes, the entire COVID pandemic for the last 3 years now almost, we have seen a great deal of cooperation across the world, whether it's in terms of research or vaccines or medicines or other supplies. And countries have constantly helped each other, continue to do so. And particularly as the case of China goes, on one hand, we seem to have a deficit of information coming out of China, whether it's in number of cases or the kinds of variants. But also at the same time, as we know, India has now taken over the presidency of G20. China is also a member state, and there's a whole range of steps being taken for pandemic preparedness, for cooperation on that matter. And therefore, this is a very important moment for India and China to, particularly for India to support China at this point. But that's, of course, subject to a more open dialogue.
Absolutely. Dialogue needs to take place, but that would mean that China actually has to admit that there is a crisis. And that seems like a long shot at the moment, because China seems to say that there's absolutely nothing wrong. There is no resurgence of the pandemic, even though there are videos and testimonies that are coming every single day out on social media talking about the kind of crumbling infrastructure that the country faces. Dr. Das Gupta, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18, because China seems to be imploding. But China does not seem to care as far as telling the world about it is concerned, because even though there seems to be a resurgence of COVID-19 cases, on the other hand, the Chinese government has lifted restrictions which could only possibly worsen the situation. CNN's Selena Wong gets us more details. China is making a major move towards ending the country's nearly 3 years of isolation. China is dropping quarantine for all international arrivals from January 8th and promising to gradually restart outbound tourism for Chinese citizens. Inbound travelers still need to get a 48-hour negative COVID test before boarding, but they dropped all of the other cumbersome requirements. To understand why these changes are such a big deal, we have to look at what the reality has been in China during the pandemic. The country has been severely limiting who can go in and out of the country with strict border controls. Flights have been very limited and expensive. All arrivals had to go through quarantine and government facilities. This new change would effectively also end the ban on Chinese citizens from going overseas for non-essential reasons. But the timing is still unclear. Authorities have not said when they'll restart issuing tourist visas or allowing foreigners to apply for business, study, or family reunion visas. Authorities in India said the guidelines are aimed at ensuring COVID does not spread as quickly as it has been in China. With that, it's time for a quick break here on this edition of Nation at 5. But lots more lined up for you on the other side. Don't go anywhere. I'm crossing over to News 18, Sachin, who is joining us live from Manali. Sachin, आप मौसम और तापमान के बारे में और बता सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू मनाली के मौसम की, तो यहाँ पर जो इसमें लगातार जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं बात करूं अभी के तापमान की, अगर मैं बात करूं मनाली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो -5 डिग्री के करीब जो है मनाली का तापमान यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरह लंबे अरसे से यहाँ पर जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते 2 दिन पहले जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो एक घाटी में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में शुष्क ठंड इसमें काफी ज्यादा, और इससे ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों सहित जो अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो है जिस तरह से जो एक उम्मीद होती थी बर्फबारी की, वो यहाँ पर नहीं होने के कारण भी इस बार जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द घाटी में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा ठंड यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो जिला लाहौल स्पीति है, जिसे जो है कोल्ड रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी जो है तापमान जो है -15 डिग्री के करीब जो वहां पर जो पहुंच चुका। और इसके साथ ही जो बहने वाले नदी नाले और झरने हैं वो भी वहां पर जो है जमने आरंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जिस तरह जो ये मौसम लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें आ रही है, क्योंकि शुष्क ठंड के चलते जो लोग यहाँ पर जो है सर्दी जुकाम की जो काफी शिकायतें आ रही है, और जो खासकर यहाँ के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीजों की जो काफी ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जिस तरह जो न्यू ईयर भी है, और ऐसे में न्यू ईयर को लेकर जो काफी सारे पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो घाटी में बर्फबारी हो। लेकिन जिस तरह मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ निराशा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, वो जो है इस ठंड के कारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे जो है जिसे हिमाचल जो फलों के लिए भी जाना जाता है, खासकर सेब के लिए, तो उस सेब की फसल पर भी जो है इसका यहाँ पर जो असर साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बर्फ ना होने के कारण जो है चीलिंग आवर जो होते हैं सेब के लिए, वो जो यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यदि इस बार जो है बर्फबारी यदि कम मात्रा में होती, तो इसका सीधा असर जो आगे आने वाले गर्मियों के दिनों में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कम बर्फबारी जो पहाड़ों पर होगी, उससे जो है पानी का संकट भी यहाँ पर जो है खड़ा हो सकता है। ऐसे में सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बर्फबारी हो, और उसके जो है यहाँ के जो यहाँ की जो टूरिज्म है, उसके साथ जो यहाँ की फसलें हैं, उसे उसका जो फायदा जो है इन चीजों को भी यहाँ पर जो मिल सके। लेकिन बात में अभी ठंड की भी करूं, तो ठंड का जो है लगातार कहर यहाँ पे जारी है। सुबह और शाम के समय जो है तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि दोपहर के समय जो मौसम साफ है, जिस तरह आप मेरे पीछे ठीक तस्वीरों में देखते हैं इसमें कि मौसम बिल्कुल साफ है और धूप जो है पहाड़ों पे खिल चुकी है। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि इस तरह जो मौसम यहाँ पे चल रहा है, दोपहर के समय जो तापमान में जो बढ़ोतरी बेशक यहाँ पे देखी जा रही है, तो दोपहर का जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री के करीब जो यहाँ पे पहुंच रहा है। लेकिन जो सुबह और शाम का तापमान है, उसमें जो है यहाँ पर खासी गिरावट देखी जा रही है। और मनाली में जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मनाली में
-5 डिग्री का जो है आज का न्यूनतम तापमान जो यहाँ पर जो अभी का दर्ज किया गया, और इसके साथ ही लाहौल स्पीति में -15 से 20 डिग्री का तापमान वो जो है वहां पर जो है दर्ज किया गया। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरह सुबह और शाम के समय जो किस तरह जो यहाँ पर जो लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है। जी सचिन जी, शुक्रिया हमें वो डिटेल्स देने के लिए और वो विजुअल्स दिखाने के लिए। आई एम आल्सो गोइंग टू बी क्रॉसिंग ओवर टू Shireen, to CNN News 18 Shireen Elizabeth, who's also joining us live from Delhi. Shireen, tell us where you are, tell us about the conditions there, because what the IMD has predicted is dense to very dense fog. Tell us more about the situation around you. Well, today it is in fact much better than what the situation in past 2 days were. There is no much fog here. You can clearly see from here where I am standing at Vijay Chowk. The Rashtrapati Bhavan is in fact visible. There is a bit of fog here. For the past 2 days, we have seen how the temperature was about 5 degree to yesterday it was 7 degree, but today right now it is about 10 degree and the sun is also out. So comparatively to the last 2 days, the situation in the national capital is much better. Though the IMD has predicted that the fog will last for about 48 hours. Today as well was supposed to be foggy, but the situation on ground looks much better though. Welcome back. The national capital continues to shiver as minimum temperatures fell below what hill stations like Dehradun, Dharamshala and Nainital usually experience. Now, Delhi recorded a minimum temperature of 5.6 degrees yesterday, which is a notch below normal, whereas Dehradun recorded 7 degrees, Dharamshala recorded 6.2 degrees, and Nainital recorded 7.2 degrees Celsius. Now, the Indian Meteorological Department has predicted cold to severe cold conditions for parts of North India over the next 2 days. The Weather Department has also said that parts of Uttarakhand, Delhi, Chandigarh, Haryana, Punjab, and western Rajasthan will continue to experience dense to very dense fog. ठंड बहुत पड़ रही है साहब। ठंड का मान है, देखो हाथ की कांकरी हो रही है। ठंड काम भी कोई नहीं कर सकता। ठंड का मान है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुबह पावड़ जम जाए और ठंड का मान फसल भी खराब हो रही है साहब। हाँ, अपनी होटल है सर्किल पर, तो बाहर देखो ठंड को मौसम हो रही है ज़्यादा, मैं के कारण ट्रक वाला और बस वाला रुककर चाय पानी पीवे। थोड़ी सी फसलां में नुकसान है। सुबह कोहरा छाया हुआ रहता है और हमारी फसल पर बर्फ़ सी जमी होती है। सुबह फसल का बहुत ही नुकसान होता है। I'm crossing over to News 18 Sachin, who is joining us live from Manali. Sachin, आप मौसम और तापमान के बारे में और बता सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू मनाली के मौसम की, तो यहाँ पर जो इसमें लगातार जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं बात करूं अभी के तापमान की, अगर मैं बात करूं मनाली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो -5 डिग्री के करीब जो है मनाली का तापमान यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरह लंबे अरसे से यहाँ पर जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते 2 दिन पहले जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो एक घाटी में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में शुष्क ठंड इसमें काफी ज्यादा, और इससे ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों सहित जो अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो है जिस तरह जो एक उम्मीद होती थी बर्फबारी की, वो यहाँ पर नहीं होने के कारण भी इस बार जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द घाटी में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा ठंड यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो जिला लाहौल स्पीति है, जिसे जो है कोल्ड रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी जो है तापमान जो है -15 डिग्री के करीब जो वहां पर जो पहुंच चुका, और इसके साथ ही जो बहने वाले नदी नाले और झरने हैं वो भी वहां पर जो है जमने आरंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जिस तरह जो ये मौसम लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें आ रही है, क्योंकि शुष्क ठंड के चलते जो लोग यहाँ पर जो है सर्दी जुकाम की जो काफी शिकायतें आ रही है, और जो खासकर यहाँ के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीजों की जो काफी ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जिस तरह जो न्यू ईयर भी है, और ऐसे में न्यू ईयर को लेकर जो काफी सारे पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो घाटी में बर्फबारी हो। लेकिन जिस तरह मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ निराशा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है वो जो है इस ठंड के कारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे जो है Welcome back. You're watching Nation at 5 and these are visuals coming in from Ahmedabad, where Prime Minister Narendra Modi has just left the UN Mehta Hospital after visiting his ailing mother, who was hospitalized this morning. She was complaining of shortness of breath, which is why she was taken for checkup there to the UN Mehta Hospital in Ahmedabad by her son, who lives with her, Prime Minister Modi's younger brother. Prime Minister Modi this afternoon decided to fly to Ahmedabad to visit his ailing mother. He's just about leaving the hospital there,
whether he's going to be staying in Ahmedabad for a longer time, or is he on his way back to the national capital. We are still gathering more details of that. We're also expecting a health bulletin to be released by the hospital shortly. Siddhant, my colleague, is joining us for more on this. Siddhant, for now, Hiraba's condition is believed to be stable. Is the Prime Minister going to be staying in Ahmedabad today, or is he returning back to the national capital? So yes, absolutely stable. Her health condition is absolutely stable. In fact, Prime Minister was there at the hospital for almost an hour, and he was there along with the other senior ministers of Gujarat government and in fact the family members of both the brothers of Prime Minister. They have also reached the hospital, so the entire family was there at the hospital. Now we can confirm this for our viewers that right now Hiraba is reacting to the treatment which is being given to them. Second, she is stable and she is recovering. So Prime Minister has left the hospital, and we really don't know that what is going to be the Prime Minister's schedule. Is he going to stay in Ahmedabad and again be visiting the hospital, or he's going to come back to the national capital? That is something which we will check and get confirmation for our viewers. But right now, Prime Minister was there with his mother for almost an hour, and now he's leaving the Mehta Hospital in Ahmedabad. Back to you. Right, Siddhant, we were also given to understand that the Chief Minister was there before the Prime Minister arrived. There was also the Health Minister of the state who was at the hospital when the Prime Minister was there. Are they still there? Are they still taking stock, speaking with the hospital authorities, or have they left as well? Well, look, Chief Minister was the first person to reach the hospital. The time he got to know, he was the first one to reach the hospital. Then Parimal Nathwani and the other senior leaders of Gujarat also did reach hospital before Prime Minister arrived. And they, after meeting the doctors and after meeting the family members, they all left. Then Prime Minister arrived. Prime Minister was there for almost an hour. He met the doctors, and in fact, Prime Minister was briefed by the doctors regarding the health of Hiraba. Each and every details were shared with him, and he was also told that Hiraba is responding to the treatment. She's stable. There's nothing to worry. Absolutely nothing to worry. And after which Prime Minister left the hospital. So as I was discussing it with you before, that we are still trying to get a confirmation that his Prime Minister is going to come back to the national capital. Is he going to stay there in Ahmedabad for a day till his mother completely recovers? That is something which we are still trying to get confirmation from the Prime Minister's office. But right now, he was there next to his mother. And yes, at the government level also there in Gujarat, the government is making sure that the best treatment is provided to Hiraba. And this is actually not for the first time that Hiraba has been admitted to the hospital in 2016. And in fact, in the past also on multiple occasions, whenever she had some issue or she suffered, she had some issues or she had complained regarding some problems, then she was taken to hospital for the treatment. So yes, and the Prime Minister makes sure that his mother gets the best treatment, whatever is needed. So this time around also, he made sure in the morning that she gets the best treatment. Then he himself took a flight and went to Ahmedabad to see his mother. So that bond is very clear actually. And each time around Prime Minister is in Ahmedabad, he visits his mother. And on various platforms, there is question about the bond that he shares with his mother. And big credit for it. Right, we'll try and re-establish that link with my colleague Siddhant there. But for now, we can tell you that Prime Minister's mother's condition is stable. And the Prime Minister has left the hospital in Ahmedabad. Whether he returns to the national capital or stays in Ahmedabad for a day or two, we'll get you more details on that. But for now, there is no reason to worry, and her condition is stable, is what the hospital has come out and said. Let's now get you a CNN News 18 super exclusive news break. There seems to be an attempt to revive the separatist movement in Punjab.
Intelligence sources have highlighted the resurgence of such campaigns in the state in the recent past, and Amritpal Singh, a 29-year-old Sikh preacher who draws inspiration from pro-Khalistani Bhindranwale, seems to now be creating an atmosphere of disquiet by raising the bogey of Khalistan yet again. Let me break it down for you and tell you how exactly he is doing so. Amritpal Singh launched the Khalsa Waheer campaign not long ago. He launched that campaign in November 2022 from Amritsar, from the Akal Takht Sahib. He announced weapon marches as part of this campaign. He wanted all of those people to participate in these weapon marches and to join in an open display of arms, including swords and guns as well. He wanted anyone who disrespected the Guru Granth Sahib to be killed. He made that call while he launched that particular campaign. He also declared protests at the Singhu border over release of Khalistani or Sikh prisoners that have been in jails across the country. He says it is going to be on the lines of the farmer agitation at the Singhu border, which we saw last year, and he has given a call for those kind of protests as well. Now, there is crackdown that is happening as we speak. The latest we know is that some of his social media accounts have also now been banned. They've been put on hold by the Indian government after concerns were raised, the kind of incendiary remarks that he was making, calling for secession or calling for a separate state for Sikhs of Khalistan. But the threat is real, and the Punjab government also needs to be acting on it. There needs to be a synergy between the state government and national agencies. Joining me on this broadcast is Senior Fellow of the ORF, Sushant Sareen, Senior Journalist Hemant Atri also with me, and former DGP of Punjab, Shashikant, is also on this broadcast. And Mr. Shashikant, I'd like to begin with you. As far as this resurgence seems to be being orchestrated on ground there in Punjab, in the last 1 month or so, since November, since this particular campaign was launched by Amritpal Singh, we've already seen the kind of disturbance on ground. There have been violence or violent attempts at Gurudwaras, at several other community centers as well. Yeah, I had joined Punjab police way back in mid-70s. There's an English word or the French word, déjà vu. Whatever is happening in Punjab takes me back to mid-70s when this kind of thing had just commenced, had just started. The same kind of incendiary remarks as you rightly mentioned. I'm talking of killing persons, maybe they are premies or those who disrespect Guru Granth Sahib and this kind of things. A call to carry weapons along with, because they say there is an integral part of this, they're right. Okay, I don't know about that, whether it's right or not. But I've seen this kind of atmosphere building up in mid-70s. And unfortunately, I fear, I dread, I'm scared, and I ask my questions, are we walking the same path? Thank you. Right, and Sushant Sareen, that's really the worry. We've seen the kind of havoc this kind of movement has wreaked a few decades ago, and we cannot have a redux of that. But that's precisely what we're having. And the problem is that nobody is asking the question, where does this guy, who's a nobody, where does this guy suddenly land up from and then suddenly start taking control of a movement which had virtually vanished? And nobody's saying anything. Nobody's doing anything about it. He seems to have got a free pass. The Punjab government under the Aam Aadmi Party seems to be winking and nudging at him, not doing anything to stop him, doing some cosmetic stuff. The central government also seems to be completely nonplussed by what is happening. And where does this guy come from? Who was Deep Sidhu? He was a third-rate actor who had, who nobody knew until this movement started, this farmers movement started. Nobody knew about him. He was a non-entity, and suddenly some obscure organization which he started has come onto the center stage in Punjab. Then we have seen that over the last few years, as the former DGP is telling us, over the last few years, we've seen a spate of incidents taking place. Everybody is sleepwalking into a disaster. So the questions need to be asked. Why is nobody taking any action against this hate monger? Why is nobody stepping up to the plate and shutting this down before it becomes a monster that we can't control? Why is such a long rope being given to these characters? While we know that in Punjab, that if you actually start cracking down hard on some of these elements, they will just fizzle out completely.
And yet there is this kind of tolerance which is completely inexplicable. It's bewildering what is happening in Punjab. And the state is going to the dogs. The economy has gone for a six. People, anybody with any means is leaving the state. People are voting with their feet. The Aam Aadmi Party government seems to be completely at sea. They don't know what to do apart from giving freebies for which they have no money. I think we are already in the middle of a disaster in the making. And of course, you have the Pakistanis playing with fire. So that is where we are at. Absolutely. And Mr. Shashikant, like Sushant Sareen was also pointing out that the threat is there. The state government seems to be faltering. But there is a window of opportunity to crack down, because from what we learn is that there isn't a lot of support that this man seems to be getting on ground, especially after the recent spate of violence that we've seen in the last couple of weeks. Opinion on ground is also divided, because the self-proclaimed messiah of the Sikh community is not something that people actually resonate with. So there is a window of opportunity for crackdown by the state government, by the central government as well, by the agencies. And yet for some reason that doesn't seem to be happening. I'll just make I'll just say one sentence before I go on to that. Look, situation in mid-70s was exactly the same. We had terrorists, we have terrorists. We had money, they had money, now they have drugs, which again gets translated into money. They had antisocial elements, now we have gangsters. Now the top of it, this particular thing is coming up as if it's a cult. Of course, it's a not cult, but that's what they're trying to give it to a religious color also, like it was in mid-70s. And to make the matters worse, it appears like Mr. Sareen has rightly pointed out that there is no effort either on the part of any of the governments that exist here to control the situation. And mark my words, if the situation is not controlled immediately, God forbid, it may get out of the hands because Punjab is already on the boiling point. Thank you. Right, and Hemant. Yes, Mr. Sareen, go ahead. Poonam, I think it has already reached the tipping point. Even if we were now to crack down, I suspect that there will be a lot of violence, even at this stage, because whatever else you might say, it might not be a very popular movement and all of that, but it does have a certain body of people who are supporting it, and they will resort to violence, partly because they are gangsters, partly because they are drug pushers, partly for a number of other ideological and political reasons. But whatever violence we will see if a crackdown happens now will be a fraction of the violence we will see if there is no crackdown right now, and we wait for another 6 months, 1 year or 2 years before, the whole hell breaks loose and the proverbial hits the fan, and then we start ducking for cover. There will be a lot more violence this time, which will put what happened in the 80s and 90s to shame. So if I was to advise the government, both in Punjab as well as in the center, I would say if there is a time to crack down, that time is now. You will have violence, you will have pushback, you will have the New York Times and the Washington Post and the rest of these rags, pointing fingers at you that India is not a democracy, human rights, etc., etc. But you will limit the damage if you do something right now. But if you wait, then you will be responsible for what will happen. And this is both the guys sitting in Delhi as well as the guys sitting in Chandigarh. So what exactly, Hemant Attri, is stopping the Punjab government? Because like I said, in the recent past, we've seen several instances of violence. Pakistan, of course, always wanting to fish in troubled waters. And they have been trying to do so in nexus. The ISI and the Khalistani nexus, again, no secret, has been trying to carry out these attacks in the last couple of months as well. What seems to be stopping the Punjab government? Are they just not equipped to deal with this? Do they not see the seriousness of the issue? Or like Sushant Sareen was pointing out, it's the fallout that they are more worried about, and which is why they don't seem to be wanting to take that first step. No, Poonamji, I fully agree with all the three points that you have said. Punjab government basically lacks willpower as far as tackling this nuance is concerned. See, one has to understand the point. There are three contours to the present problem. First of all, why in the first place Punjab government allowed this gentleman to carry this campaign, whatever he is running for last, say, about a month or so? Why they are allowing him? A person, as per the Indian constitution, who is openly calling for beheading somebody involved in the sacrilege. What does it mean? He is playing with the fire and he is playing with the law, number one.
Number two, he is coming out with all those weapons in processions, meaning thereby he is, inflating the so-called emotions and sentiments of the Sikh youths, particularly. And number three, the most important is ISI is also very, very desperate in flaming some kind of terrorism in Punjab or as well as in Jammu and Kashmir. They are not able to do as of now, but they are fully prepared. Yesterday also, if you recollect, what has been done in Tarnatan, they have received a ready-to-use. They have just, grabbed one ready-to-use RPG yesterday from the riverbed. It was ready to use. And 15 days back, in the Sahali police station, the same was fired, the another RPG. So the thing is, what for Punjab police is waiting? They are waiting for a big, nuisance to be created. And second thing, they have to understand, Punjab youth, they are terribly unemployed. There is a social contour to it also. Not only tracking this man out, taking with a strong head, also they have to, address the issue of unemployment. See, most of the youth in Punjab, immediately after doing the +2 or graduation, they are looking for greener pastures in Canada, Australia, or Britain or somewhere. And these are the people who are catch them young. And the same strategy is there. Yesterday, Punjab police in Tarn arrested 3 guys. All are from 21 to 22 years age group, right? And the previous, the RPG attack, which was there on the police station, 3 of them were, minors. So Punjab police has to understand, the Punjab government has to understand the nuances of the whole issue. They are getting the youngsters who are unemployed. And easy money is there, narcotic money is there, gangsters are there, everything is available in jails. What for Punjab police is waiting? See, ISI is desperation. And this gentleman who is spearheading all this campaign, he returned from Dubai after 10 years. And he didn't come directly from Dubai to India. He went to Georgia first. What for he was there? And then going back to Dubai and then coming back to India. And for a very little known organization like Waris Punjab, now there are 3,000 active members. Don't the Punjab police understand, or the Punjab government for that matter doesn't understand the big nuance of it? This is going to be a big mess. If they don't come very, they have to get them out, all of them, and take them head on. Otherwise, this is going to be a big menace, I'm telling you this. Absolutely. And Mr. Shashikant, you've been part of the force there. To anyone who hears the kind of commentary this man has been making, would agree with you and me that there are several provisions in the law which can be used to put him in jail. Just this most recent instance, and yet we don't see that happening. The entire law book there, not only the legal provisions, constitutional provisions, but the entire law book. Look, this is the situation which can be taken use, or that can be made good use of by the government of India as well. I'm saying it very consciously and with also so many care. This guy is saying that he wants to unite this part of India with whatever Pakistan, West Pakistan, which West Punjab has gone to that place. ISI is playing a dirty game. They are trying, at this time, they are carefully trying to wash their hands off, saying that this has not been propped up by them, because he is asking for merger of that West Punjab with East Punjab along with other areas. So it's a very clever ploy, and this is about the time that government of India can take benefit of. And this rag, this New York Times and this Times and Ministry International, etc., it can be given a diplomatic cover and throw the law book at him. Throw the law book at him. There are thousands of provisions. It can be controlled. Control it right now, otherwise it'll be too late. Thank you. Absolutely. It is the need of the hour, and there needs to be a synergy between the state government and the central agencies to ensure a crackdown happens sooner than later. This man that you see on your screens is no innocent leader who seems to be preaching to his community. He definitely is inciting passions, and that is something that needs to be contained. I thank you all gentlemen for joining us here on this broadcast as we bring this super exclusive to our viewers. But with that, it's time for a quick break. Back in just a few minutes. Do stay tuned. Who is joining us live from Manali. Sachin, आप मौसम और तापमान के बारे में और बता सकते हैं?
जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू मनाली के मौसम की, तो यहाँ पर जो इसमें लगातार जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ अभी के तापमान की, अगर मैं बात करूँ मनाली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो -5 डिग्री के करीब जो है मनाली का तापमान यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरह लंबे अरसे से यहाँ पर जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते 2 दिन पहले जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो एक-एक घाटी में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में शुष्क ठंड इसमें काफी ज्यादा, और इससे ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों सहित जो अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो है जिस तरह से जो एक उम्मीद होती थी बर्फबारी की, वो यहाँ पर नहीं होने के कारण भी इस बार जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द घाटी में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा ठंड यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो जिला लाहौल स्पीति है, जिसे जो है कोल्ड रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी जो है तापमान जो है -15 डिग्री के करीब जो वहां पर जो पहुंच चुका, और इसके साथ ही जो बहने वाले नदी नाले और झरने हैं वो भी वहां पर जो है जमने आरंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जिस तरह जो ये मौसम लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें आ रही है, क्योंकि शुष्क ठंड के चलते जो लोग यहाँ पर जो है सर्दी जुकाम की जो काफी शिकायतें आ रही है, और जो खासकर यहाँ के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीजों की जो काफी ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जिस तरह जो न्यू ईयर भी है, और ऐसे में न्यू ईयर को लेकर जो काफी सारे पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो घाटी में बर्फबारी हो। लेकिन जिस तरह मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ निराशा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, वो जो है इस ठंड के कारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे जो है जिसे हिमाचल जो फलों के लिए भी जाना जाता है, खासकर सेब के लिए, तो उस सेब की फसल पर भी जो है इसका यहाँ पर जो असर साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बर्फ ना होने के कारण जो है चीलिंग आवर जो होते हैं सेब के लिए, वो जो यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यदि इस बार जो है बर्फबारी यदि कम मात्रा में होती, तो इसका सीधा असर जो आगे आने वाले गर्मियों के दिनों में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कम बर्फबारी जो है पहाड़ों पर होगी, उससे जो है पानी का संकट भी यहाँ पर जो है खड़ा हो सकता है। ऐसे में सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बर्फबारी हो, और उसके जो है यहाँ के जो यहाँ की जो टूरिज्म है, उसके साथ जो यहाँ की फसलें हैं, उसे उसका जो फायदा जो है इन चीजों को भी यहाँ पर जो मिल सके। लेकिन बात मैं अभी ठंड की भी करूं, तो ठंड का जो है लगातार कहर यहाँ पे जारी है। सुबह और शाम के समय जो है तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि दोपहर के समय जो मौसम साफ है, जिस तरह आप मेरे पीछे ठीक तस्वीरों में देखते हैं इसमें कि मौसम बिल्कुल साफ है और धूप जो है पहाड़ों में खिल चुकी है। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि इस तरह जो मौसम यहाँ पे चल रहा है, दोपहर के समय जो तापमान में जो बढ़ोतरी बेशक यहाँ पे देखी जा रही है, तो दोपहर का जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री के करीब जो यहाँ पे पहुंच रहा है। लेकिन जो सुबह और शाम का तापमान है, उसमें जो है यहाँ पर खासी गिरावट देखी जा रही है। और मनाली में जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मनाली में 5 डिग्री का जो है आज का न्यूनतम तापमान जो यहाँ पर जो अभी का दर्ज किया गया, और इसके साथ ही लाहौल स्पीति में -15 से 20 डिग्री का तापमान वो जो है वहां पर जो दर्ज किया गया। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरह सुबह और शाम के समय जो किस तरह जो यहाँ पर जो लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है। जी सचिन जी, शुक्रिया हमें वो डिटेल्स देने के लिए और वो विजुअल्स दिखाने के लिए। आई एम आल्सो गोइंग टू बी क्रॉसिंग ओवर टू Shireen, to CNN News 18 Shireen Elizabeth, who's also joining us live from Delhi. Shireen, tell us where you are, tell us about the conditions there, because what the IMD has predicted is dense to very dense fog. Tell us more about the situation around you. Well, today it is in fact much better than what the situation in past 2 days were. There is no much fog here. You can clearly see from here where I am standing at Vijay Chowk. The Rashtrapati Bhavan is in fact visible. There is a bit of fog here. For the past 2 days, we have seen how the temperature was about 5 degree to yesterday it was 7 degree, but today right now it is about 10 degree and the sun is also out. So comparatively to the last 2 days, the situation in the national capital is much better. Though the IMD has predicted that the fog will last for about 48 hours. Today as well was supposed to be foggy, but the situation on ground looks much better though. Welcome back. The national capital continues to shiver as minimum temperatures fell below what hill stations like Dehradun, Dharamshala and Nainital usually experience. Now, Delhi recorded a minimum temperature of 5.6 degrees yesterday, which is a notch below normal, whereas Dehradun recorded 7 degrees, Dharamshala recorded 6.2 degrees and Nainital recorded 7.2 degrees Celsius. Now, the Indian Meteorological Department has predicted cold to severe cold conditions for parts of North India over the next 2 days. The Weather Department has also said that parts of Uttarakhand, Delhi, Chandigarh, Haryana, Punjab and western Rajasthan will continue to experience dense to very dense fog. ठंड बहुत पड़ रही है साहब। ठंड का मायने देखो हाथ की कांकरी हो रही है। ठंड काम भी कोई दिक्कत से ठंड का मायने बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुबह पावड़ जम जाए और ठंड का मान फसल भी खराब हो रही है साहब। हाँ, अपनी होटल है सर्किल पर, तो बाहर देखो ठंड का मौसम हो रहा है ज़्यादा।
मैं के कारण टरकाला बस वाला रुकर चाय पानी पीवे। थोड़ी सी फसलां में नुकसान है, सुबह कोहरा छाया हुआ रहता है और हमारी फसल पर बर्फ़ सी जमी होती है। सुबह सुबह फसल का बहुत ही नुकसान होता है। I'm crossing over to News18 Sachin, who is joining us live from Manali. Sachin, आप मौसम और तापमान के बारे में और बता सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू मनाली के मौसम की, तो यहाँ पर जो इसमें लगातार जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ अभी के तापमान की, अगर मैं बात करूँ मनाली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो -5 डिग्री के करीब जो है मनाली का तापमान यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरह लंबे अरसे से यहाँ पर जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते 2 दिन पहले जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो एक एक घाटी में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में शुष्क ठंड इसमें काफी ज्यादा, और इससे ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों सहित जो अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो है जिस तरह जो एक उम्मीद होती थी बर्फबारी की, वो यहाँ पर नहीं होने के कारण भी इस बार जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द घाटी में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा ठंड यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो जिला लाहौल स्पीति है, जिसे जो है कोल्ड रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी जो है तापमान जो है -15 डिग्री के करीब जो वहां पर जो पहुंच चुका, और इसके साथ ही जो बहने वाले नदी नाले और झरने हैं वो भी वहां पर जो है जमने आरंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जिस तरह जो ये मौसम लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें आ रही है, क्योंकि शुष्क ठंड के चलते जो लोग यहाँ पर जो है सर्दी जुकाम की जो काफी शिकायतें आ रही है, और जो खासकर यहाँ के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीजों की जो काफी ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जिस तरह जो न्यू ईयर भी है, और ऐसे में न्यू ईयर को लेकर जो काफी सारे पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो घाटी में बर्फबारी हो। लेकिन जिस तरह मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ निराशा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है वो जो है इस ठंड के कारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे जो है जिसे हिमाचल जो फलों के लिए भी जाना जाता है, खासकर सेब के लिए, तो उस सेब की फसल पर भी जो है इसका यहाँ पर जो असर साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बर्फ ना होने के कारण जो है चीलिंग आवर जो होते हैं सेब के लिए, वो जो यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यदि इस बार जो है बर्फबारी यदि कम मात्रा में होती, तो इसका सीधा असर जो आगे आने वाले गर्मियों के दिनों में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कम Welcome back. Prime Minister Modi is in Ahmedabad to visit his ailing mother Hiraba, who has been hospitalized. She was hospitalized this morning in the UN Mehta Hospital in Ahmedabad after she complained of shortness of breath. The hospital has released a medical bulletin saying that her condition is stable. Prime Minister Modi just a short while ago exited the UN Mehta Hospital after meeting his mother for about an hour and a half. He has now reached the airport, is what we're given to understand, expected to return to the national capital. Meanwhile, Congress President Mallikarjun Kharge and Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra took to social media and expressed their support to the Prime Minister, also wishing his mother a speedy recovery. BJP MP Jugal Singh Thakur, who was one of the BJP leaders who was at the hospital when the Prime Minister visited his mother, has now come out and said that Hiraba's condition is stable, it's good and improving, and she's likely to be discharged in the next 2 days. स्वास्थ्य अच्छा है। नॉर्मली उम्र होती है तो दिक्कतें आती रहती है, पर उनकी अच्छी है, उनकी सेहत अच्छी है, उनकी सेहत अच्छी। अभी शायद 2 दिन के अंदर उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। The Prime Minister has taken stock of his mother's health. He's met her, and there were several other BJP leaders, including the Chief Minister of Gujarat, who was also present there. And politicians from across party lines have been taking to social media, pouring in their wishes for a speedy recovery to the Prime Minister's mother. But back in 2015, during a conclave with Mark Zuckerberg, this is what the Prime Minister had to say about his mother and the impact she's had on his life. हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, 2 चीज़ें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा। हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए, 2 वे 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 2
अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, कितना कष्ट उठाया होगा। You can't throw this charge willy-nilly with no authenticated source. We are currently trying to deal with Chinese aggression. If we put India down, that means we can put Modi on the map. Is that the right strategy, or do you disagree with that kind of an approach? I cited you ample evidence when it comes to Tablighi Jamaat. You said that this is some kind of conspiracy. Here is Rahul Gandhi speaking in Hindi and saying that Hindi speakers should not dream big because they'll not get a job outside. That is where the problem begins. Namaste, Jai Hind, and welcome to Viewpoint. We train the spotlight back on China on this edition. A nation that unleashed the pandemic upon the world back in 2019 remained evasive about it till early 2020. A nation that in the past has been the place of origin of the SARS virus, a nation under scrutiny for actively pursuing research in biological weapons, a nation which is on record stating that it is indeed researching and experimenting on various strains of the SARS viruses. But China has got away with it all so far. By making huge donations and contributions to the WHO, it is also accused of misusing its position as the WHO chair in the past, and also blamed for not allowing any proper investigation into the origin and outbreak of the China virus or Covid-19 from Wuhan. But you can't get away with assault on humanity.